अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारे पास बुक है, ये हमारी बुक बहुत ही खूबसूरत सी है, मैथ स्किल्स 2। इसका मतलब है कि ये 2 क्लास की बुक है। नाउ ओपन ऑन पेज नंबर 21। ऑन पेज नंबर 21 ऑल्सो यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वंस का, टेंस का और 100 एंड 1000 के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। देन हम लोगों ने काउंटिंग जो है वो हमने सीखी 100 टू 299 तक। दैट हमने सीक्वेंस जो है वो सीखे बिफोर के, आफ्टर के और बिटवीन के। फिर हमने कंप्लीट किए सीक्वेंस जो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी बुक पर दिए गए थे। नाउ ऑन टुडे वर्कशीट कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमने यहाँ पे क्या करना है, सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। नाउ 300 टू 339। सो चले तो हम लोग अपने वर्क को कंप्लीट करना शुरू करते हैं। 300, 301, 300, 2, 303, 304, then 305, 306, 307, 308, 309, then 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, then 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339. Now next is 400 to 439. Now 400, 401, 402, 403, 404, 405, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439. Now move on next, and the next is complete the following sequence. Now 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 889, 880, 90, 899 के बाद 890. Now 891, 892, 893, 894, 895, 780, 719, 720, 721, 722, 723 and 724, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586. Now next is 640, 650, 651, 652, 653, 654, 655. Then 994, 995, 996, 997, 998, 999, then 1000.
ऑलवेज रिमेंबर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि जो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है वो 999 होता है। देन द स्मॉलेस्ट 4 नंबर इज़ 1000। Now move on next. Next is counting up to 1000, unit number 2, and also worksheet count in tens and write the numbers. For example, 1 2 3 3 tens, 1 2 3 4 4 40s. Now 1 2 3 4 5 5 50s. Now 1 2 20s. Now the page number 22 is done. Move on next page, and the next page is page number 23, and also topic is counting up to 100,000. Now counting by skipping hundreds and tens. So यहाँ पर skip किए गए हैं 100 और tens को। यहाँ पर हम लोगों ने complete the given table. For example 10, 110, 120। सो हमने क्या करना है, इस तरह से 1 1 इसमें इजाफ़ा करता जाना है। जैसे हमने वहाँ पर इजाफ़ा तो किया और साथ में हमने ज़ीरो का भी इजाफ़ा किया। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50। ओके, नाउ 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 and 200. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, then 400. 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, then 500. 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590 and 600. Now 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, then 700. Now 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, then 800. 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, then 900. Now 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, then 1000. Now move on next, and the next is काउंट इन टेंस एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। सो हमने क्या किया, हमने इसमें सबसे पहले तो सीखा कि 10 को मज़ीद अंदर ऐड करते जाना है। देन 100 में जब हम ऐड करेंगे 1 मोर को तो वो 200 बन जाएगा। देन हम 1 मोर 100 ऐड करेंगे तो 300। देन हम 1 मोर 100 जो है वो ऐड करेंगे तो 400। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ काउंट इन टेंस एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। नाउ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 110, 20, 130, 140, 150, 160, 170. Now 380, 390, 400, 410, 420, 430. Now count in hundreds and complete the sequence. 200, 300, 400, 500, 600, 700. 410, 410,
410, 510, 610, 710, 810, 910, 500, 600, 700, 800, 900, then last is 1000. Now move on next. Then unit number 2, counting up to 1000, comparing numbers smaller and greater. Look at the following number. हमने इस following numbers को देखना है. Then 58 है. Then tens कितने 1 2 3 4 5 tens. And how many ones? 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 ones. Now how many tens? 1 2 tens. And how many ones? 1 2 3 4 5 6 7 ones. कंपेयर टेंस, हमने इन्हें कंपेयर करना है 10 में. 5 टेंस आर मोर देन 2 टेंस इज इक्वल, थस 58 इज़ ग्रेटर देन 27. सो 5 जो है वो मोर है किससे? 2 टेंस से. सो इट्स मीन 58 जो है वो ग्रेटर है देन 27 के. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वर्कशीट. नाउ इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर. इन दिनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर 2 टेंस और यहाँ पर 3 टेंस है. सो इट्स मीन 3 टेंस जो है वो मोर है, इसलिए यहाँ पे सर्कल. यहाँ पे 1 टेंस है और यहाँ पे 5 टेंस है. सो 52 इज़ मोर देन 19. और यहाँ पर 4 टेंस है और यहाँ पर 6 टेंस है. सो 6 टेंस इज़ मोर देन 48. नाउ नेक्स्ट इज़ 83 और 90. सो 90 इज़ मोर देन 8. Now 31 and 62. Now 62 is greater. Now 76 or 58. Now 76 is greater than 58. Now 40 or 39. Now 40 is greater than 39. Now 60 or 73. Now 73 is greater than 60. Now 96 or 70. Now 96 is greater than 70. Now 91 or 38. Now 91 is greater than 38. Now 84 or 90. Now 90 is greater than 84. Now 31 or 28. Now 31 is greater than 28. Now next is 20 or 54. Now 54 is greater than 20. Now 49 or 73. So 73 is greater than 49. Now 80 or 61. Now 80 is greater than 61. Now move on next page. On next page is page number 25 and also unit number 2, counting up to 1000, comparing numbers smaller and the greatest. Look at the following picture. सो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से टेंस और वंस के जो हैं वो ब्लॉक्स बने हुए हैं. सो 38 and 35. नाउ 1 2 3 1 2 3 3 and 3. then ones 1 2 3 4 5 6 7 8 ones जो है वो ज़्यादा. then 1 2 3 4 5. then 5 जो है वो कम है. कंपेयर टेंस आर सेम. 3 इज़ इक्वल 3. 10 जो है वो सेम है 3 इज़ इक्वल 3 के. बट कंपेयर वंस को जब हम कंपेयर करते हैं सो 8 इज़ मोर देन 5 वंस. thus 38 is greater than 35 or 35 is smaller than 38. इनसर्कल द स्मॉलर. हमने यहाँ पे क्या करना है? छोटे को सर्कल करना है. नाउ 64 और 69. नाउ द 4 इज़ स्मॉल एंड द 9 इज़ ग्रेट. द स्मॉलर इज़ 64. then 53 or 54. now smaller 53. now next is 93 or 97. now smaller number is 93. now the next is 68 or 60. now the 68 is smaller than 69. now 78 and 75. now 75 is smaller than 78. now 53 or 59. now 53 is smaller than 59. now 70 or 77. now 70 is smaller than 77. now 90 or 40. now 40 is smaller than 90. now move on next. on next is page number 26. on page number 26 unit number 2. on unit number 2, counting up the 100 or thousands ones. so comparing numbers smaller and greater. look at the given numbers. so हम given numbers को देखेंगे. 1 5 ones
2 tens, 100s, 6 ones, 4 tens, 5 200. Now compare hundreds. 100 is less than 200. 100 जो है वो छोटा है 200 से. So 125 is smaller than 246 or 243 is greater than 125. So tick the greatest number. ना यहाँ पर अगर हम देखें तो 399 से जो है वो बड़ा है 410. तो हाँ, हमने ग्रेटर को टिक करना है. इट्स मीन हमने ज़्यादा को टिक करना है. नाउ नेक्स्ट इज़ 230 और 228. सो 228 इज़ ग्रेटर दैन 230. नाउ 399 584 and 690. So 690 is greater than 584. Now the next is 670 or 810. Now 610 is greater than 670. Now 714 and 910. Now 910 is greater than 740. Now 821 and 628. Now 821 is greater than 628. Now 388 and 479. Now 479 is greater than 388. Now 591 and 639. Now 639 is greater than 591. Now 779 and 881. Now 881 is greater than 779. Now next is 550 or 672. Now 672 is greater than 550. Now next is 521 and 529. Now 529 is greater than 321. Now 893 and 992. Now 992 is greater than 893. Now 584 and 891. Now 891 is greater than 584. Now 813 and 679. Now 813 is greater than 679. Now 778 and 699. Now 78 is greater than 699. Now next is 222 and 333. So 333 is greater than 222. Now 449 and 891. Now 891 is greater than 449. Now 123 and 231. Now 231 is greater than 121. 379 and 976. So 976 is greater than 679. Now 636 and 424. Now 29 is greater than 666. Now 888 and 999. Now 999 is greater than 888. Now move on next page. On next page is page number 27, and on page number 27 unit number 2, and also topic is counting up to 1000. So comparing numbers smaller and greatest. Look at the given numbers. तो हम यहाँ पर गिवन नंबर्स को देखते हैं. अगर हमने देखा है इन्हें, हमने वंस और टेंस में कैसे लिखा. सो 3 ones, 2 tens, 100. 8 ones, 2 tens and 100. So compare 100. The 100 are the same. 100 जो है वो same है. Compare 10. So the 10 also same. So 10 भी जो है वो same है. So compare ones. So compare ones को कम करेंगे. 3 ones are less than 8 ones. 3 जो है वो कम है 8 से. So thus 123 is smaller than 128, or 123 is greater than 123. Now move on next worksheet. Now tick the smaller number. स्मॉलर नंबर पे हमने टिक करना है. Now 119 जो है वो बड़ा है 114 पे, बिकॉज फर्स्ट 2 जो है ये तो दोनों सेम है. 2 then 2 same, 1 or 1 same, but 9 is greater and 4 then less. Now 518 and 519. Now 518 is smallest than 519. Now 710 and 714. Now 710 is smaller than 714. Now 594 and 570, 897. So 594 is smallest than 897. Then 936 and 939. Now 936 is smallest than 939. Now 728 and 928. Now 728 is smallest than 928.
Now next is 672 and 527. Now 527 is smallest than 672. Now 411 and 418. Now 411 is smallest than 418. Now 924 and 912. So 912 is smallest than 924. Now 924 and 524. Now 324 is smaller than 524. Now 498, 398. Now 398 is smallest than 498. Now 215, 219. Now 215 is smallest than 219. Now next is 836 and 835. So 835 is smallest than 836. Now 777 and 666. Now 666 is smallest than 777. Now 222 and 954. Now 222 is smallest than 954. Now move on next, and the next is counting up to 1000. Unit number 2, greater than, लेस देन एंड इज़ इक्वल. ग्रेटर और लेस देन और इज़ इक्वल टू, यानी ये हम लोगों ने 1 क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, जिसमें हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से एक क्रोकोडाइल को देखा जो अपना फेस जो है वो ज़्यादा चीज़ों की तरफ जो है वो खोलता है और वो ज़्यादा चीज़ों को खाना पसंद करता है. दैन यहाँ पर हमारे पास हमने वही वाला मेथड इस्तेमाल करना है, और जो ज़्यादा हो हमने उसकी तरफ जो है वो साइन अप करना है राइट की जानिब, और जो कम होगा वो लेफ़्ट की जानिब, और जो इज़ इक्वल होगा इट्स मीन कि वो बराबर होगा तो हमने उसकी जानिब, यानी जहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होगी तो क्रोकोडाइल जो है वो उस तरफ को मुँह ज़्यादा खोलेगा. नाउ इन फर्स्ट लुक दिस इज़ 77 एंड दिस इज़ 67. नाउ 73 इज़ ग्रेटर देन, क्रोकोडाइल ने उस तरफ मुँह खोला. ओके, नाउ 59 और 60. Now 60 is more than 59. Then crocodile ने 60 की तरफ अपने फेस को खोला. Then 84 and 60. So 84 is more than 60. Now next is 29 and 24. So 29 is more than 24. So दोनों जो है वो इक्वल है. Then 54 and 64. So 64 is greater. Now the 78 and 77. 87. Now 87 is greater than 78. Now 67 and 69. Now 69 is greater than 67. Now 98 and 89. Now 98 is greater than 89. Now next is 47 and 74. So 74 is greater than 47. Now is equal because 40 और 40 दोनों सेम है. Now 51 and 71. Now 71 is greater than 51. Now 79 so and 97. So 97 is greater than 79. Now 82 and 79. So 82 is greater than 79. So 60 or 59. So 60 is greater than 59. Now 103 and 109. Now 109 is greater than 103. Now 190 or 140. So 119 is greater than 140. So 228 and 232. So 232 is greater than 228. So 418 and 292. So 418 is more than 292. So 507 और 705. So 705 जो है वो बड़ा है 507 से. Now next is 630 और 730. So 730 जो है वो ज़्यादा है. Now move on next. So the 524 and 523. So 524 is more. Now 828 or 488. So 828 is more. So 529 and 429. Now 529 is more. Now next is 315 or 395. So 395 is more than 315. Now 632 or 822. So 822 is more than 632. Now 779 179 and 397. So 397 is more than
179. Now 584 and 574. So 584 is more than 574. Now 922 and 928. So 928 is more than 922. Now 315 and 315. So दोनों सेम है, इसलिए हमने इस इक्वल का निशान जो है वो लगाया. Then 607 and 570. So 670 is more than 570. 421 and 421. It's mean is equal. Now 100 or 109. Now 109 is more than 100. Now move on next. On next is very beautiful work. Now on page number 29. Now on page number 29, counting up to 100, unit number 2, comparing number the greater and the smaller. So कंपेयरिंग नंबर जो है हमारे पास, लुक एट द फॉलोइंग नंबर, हमने इन नंबर्स को देखना है. देन हम लोगों ने जो है वो 8 इज़ द ग्रेटर नंबर, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो 8 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है और जो 4 है वो सबसे छोटा नंबर है. नाउ लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स. चलें तो हम इन नंबर्स को देखते हैं. देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे पहले टेंस को. सो टेंस जो है इन सब में टेंस जो है वो 8 आता है, ओके. और जो सबसे छोटा टेंस है वो 34 है. चले तो हम देखते हैं. कंपेयर टेंस. 8 इज़ द ग्रेटेस्ट देन और मोर देन 7 and 3 टेंस. 8 जो है वो बड़ा है 7 और 3 से. 82 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. 82 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है. 3 टेंस और लेस देन 8 and 7 टेंस. 3 टेंस जो है वो लेस देन है 8 and 77 से, ओके. नाउ 34 is the smallest number. So encircle the greatest number. 34 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्कशीट को डन करेंगे और इसमें हमने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को ढूंढना है और फिर हमने उससे क्या करना है, हमने सर्कल करना है. नाउ लुक 9, 7 and 5. सो 9 इज़ ग्रेटर दैन 7 और 5. नाउ 17, 10 or 35. So 35 is greater than 17 or 10. Now 19, 35 and 40. So 35 is greater than 40. Now 84, 48 and 58. So 84 is greater than 48 or 56. Now 29, 19 and 39. So 39 is greater than 90 or 29. Now 84, 92 and 70. So 92 is greater than 84 or 70. Now 35, 25 and 62. So 62 is greater than 35 or 25. Now 77, 66 and 55. So 77 is greater than 66 or 55. Now 23, 33 and 12. So 33 is greater than 12 or 23. Now move on next page. On next page is very beautiful page. Now हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने पेज नंबर 29 तक अपना जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जिसमें हमने द ग्रेटेस्ट, लेस देन एंड इक्वल टू के मेथड को सीखा. फिर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को सीखा. देन हमारा जो वर्क है आज इतना ही. हमने पेज नंबर 29 तक अपने वर्क को कंप्लीट किया. सो किड्स, आपने भी बेहतरीन तरीके से यूनिट नंबर 2 एंड ऑल्सो आपने इस पेज को जो हमारा टॉपिक है काउंटिंग अप टू 1000 की, सो आपने क्या करना है, पेज नंबर 29 तक अपने वर्क को कंप्लीट करना है बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से. सो किड्स, अभी तक के लिए इतना ही. सो मुझे दीजिए इजाज़त. आप भी जो है वो यूनिट 2 को इसी तरह कंप्लीट कीजिए और खूबसूरत तरीके से आपने क्या करना है, अपने वर्क को डन करना है. सो किड्स, अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.